अरे ये नको रे ये नको बाबा आणखी अभी किसको देंगे हाँ that's finish center down तो left last minute. thank you Thank you. Thank you. I can't believe I was eating sandwich while taking this picture. अरे क्या कर रहे हैं non stop Thank you. Okay, good. Thank you. आता क्वांटिटी बोल रहा अच्छा सर सेंटर डाउन सर यहाँ पे सेंटर बाय सेंटर रुकिए वीडियो के लिए क्या हुआ थैंक यू रुकिए रे ना निकिता मैम रुकिए ये दादा देखा जा रहा है मैं अभी जस्ट टिकट तो चेक कर रहा हूँ मैम सेंटर डाउन मैम सेंटर सोलो हो गया वेट मैडम रुकिए ना हुआ नहीं अभी फोटो का हो गया हमारा नहीं हुआ है सेंटर Thank you. रुकिए ना सब बीच में क्या कर रहे हो? सेंटर लो सेंटर सर राइट लेफ्ट सर सेंटर में लोग अभी सोलो Thank you, sir. विशालदन सर सेंटर डाउन सर यहाँ पे होल्ड नेक्स्ट हरविंदर सर आइए सर सेंटर डाउन सर यहाँ पे वेट सेंटर लो थैंक यू दंगे पार्ट बीच में कौन music because so interesting you haven't revealed much in the trailer कुछ पंगा चल रहा है कुछ चल रहा है हर्ष और रेहान के बीच में तो state your thoughts behind दंगे. Well, I always wanted to do a film set in a college. It was something that I always wanted to do. So finally मुझे एक मौका मिला to tell a story which is set in a campus. And उस मौके को then I tried to max it out by trying to do it as a bilingual and doing it 2 different languages, 2 sets of actors. Though I've done bilinguals in the past, but this is truly an authentic bilingual. When I say authentic bilingual, it has been shot twice with a separate cast, separate supporting cast, and a very cooperative cast who all came together. We all came together and made this film with a lot of love, it's a labor of love. And the idea was to try and tell an authentic campus-based story. And something that I've not said before, but it's actually the main incident in the film is actually based on a true incident that happened in our campus. I can't really talk much about the true incident, but the inspiration was from something that actually happened in one campus in
from there the story started, and of course it took its own shape. Were you like one of the leads in that story? I am not the lead. No, in the true story, were you? No, I was not. Luckily, no, I was not. But I got like a first-hand account of something that actually happened. In fact, without revealing too much, one of the writers was part of the event. Oh, okay. Harsh, you're looking fabulous in the trailer. Looking forward to seeing the film, and of course, it's a reunion with Vijay sir as well. Tell us, how did you prepare for your character? With Vijay sir, it is mostly I switch off all my buttons and just surrender. I love to surrender to him because he's more than a parent, and I can say, you know, when you're dealing with your parents, you know they'll always look out for you and they'll always give you the best possible. So with him, I don't know why, but I feel like that. Sir, अपनी will में मेरा नाम लिख दो. मेरा parent बोला है. एक बात हिंदी चलेंगे. हाँ बिल्कुल. तो एक बात कही जाती है कि बड़े मशहूर कवि शायर कहकर गए थे कि अगर नई जनरेशन को गुस्सा नहीं आता है तो समझिए उस देश का भविष्य खतरे में है. यहाँ तो एक साथ बहुत सारे गुस्से वाले लोग दिख रहे हैं. बहुत सारे गुस्से वाले हैं सब. उनको एकदम गिन चुन के मैंने इकट्ठा किया है फिल्म के लिए. बट आपका कहना मैं एकदम उसके साथ सहमत हूँ. मुझे लगता है कि वो काफ़ी नहीं है और होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. टुडेज जनरेशन I feel needs to kind of stand up more for what they believe in, and we are already on the right track, but I think that a bit of a push is needed. That's what I personally feel. आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आपने देखा है वहाँ पर नई जनरेशन को चूँकि आप फिल्म करने का, आपको क्या लगता है आज की जनरेशन कितना सही है और कहाँ कम कर रही है या कहीं गलत जा रही है? Our generation today is definitely woke, जो कहते हैं wokeism का जो कल्चर है, and a lot has to do with social media also, क्योंकि लोगों को अवेयर रहना ज़्यादा आसान है because it's easier to know कि क्या चल रहा है. आज बाहर के देश में क्या हो रहा है हमें यहाँ बैठे ऑलरेडी पता है. ऑलरेडी we are taking a stand. So definitely there is aggression, but as he rightly said, there needs to be more, and I feel somewhere this film kind of shows that जो एक aggression आज के युग में रहना चाहिए वो आपको इस फिल्म में दिखेगा. तो I'm really hoping that लोग इसको देखकर इंस्पायर हो, थोड़ा सीखें, थोड़ा मजा करें जिस हिसाब से हमने ये फिल्म बनाई. Harsh, you have a huge fan following, you know, all around, especially among the female folks. So, what would you say? Why should they watch DANGE? For Harshvardhan, that's the answer. More than watch DANGE, I want to find out where do they watch DANGE. वो अगर ऑनलाइन आने के बाद देखते हैं, जैसे उन्होंने मेरी पहली फिल्म को बहुत देखा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लैपटॉप पे वो लोग क्या करते हैं मेरे प्रोड्यूसर को पता नहीं पड़ता है. थैंक गॉड, क्योंकि उसकी सर्च हिस्ट्री तो वो लोग चेक नहीं करते मेरे प्रोड्यूसर्स. तो मेरे प्रोड्यूसर तक ये खुशखबरी पहुंचने के लिए थिएटर में ही देखना पड़ा. और किसी भी फिल्म का पार्ट 2 क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि पार्ट 1 की टिकट नहीं खरीदी गई. लैपटॉप पर क्या मिल रहा है. इस फिल्म के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो इंसान इतने कामली बैठे हुए हैं, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं. इट डजंट शो इट, बट इफ लेट्स नॉट पर्सनली, चलो इनके लिए अगर आप नहीं भी सोच रहे हो, एक फिल्म को अगर आप थिएटर में टिकट लेके नहीं देखेंगे तो इनकी मेहनत, प्रोड्यूसर की विजन, एक्टर का नेक्स्ट काम, सब चीज़ों पे. I think more than that, जैसा आप लोगों ने ट्रेलर में देखा है, I personally feel दंगे एक ऐसी फिल्म है आप थिएटर में जाकर ही उसको जस्टिस कर पाएंगे, because the way you will enjoy it on the big screen, you may not enjoy it on the small screen. So that's why I just want to tell people, if you really want to watch Dange, go to the theaters and watch it. It's a big screen actually experience it. हर्ष, अहान और निकिता, सब आपसे पूरी Excuse me, आप पीछे can someone please maintain silence? It's very difficult for us to focus. Thank you. जी, सबसे पहले मैं आप लोग को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी. बहुत अच्छा. Thank you. जी, आपका ट्रेलर बहुत अच्छा है. आप तीनों से मेरा सवाल है. हर्ष, पहले आप जवाब दें. आप, निकिता और अहान, आप लोग कॉलेज में कैसे थे? कितने जुनूनी थे? कितने कंस्ट्रक्टिव थे? कितने डिस्ट्रक्टिव थे? कैसा था आप लोगों का टाइम? या एकदम सीधे साधे थे? कैमरा इस सवाल से बाहर सेंटर लो. मैंने कॉलेज नहीं किया है. ये सवाल में कॉलेज में अभी हम गए थे इवेंट के लिए, वहाँ पे अवॉइड करके आए बड़ी मुश्किल से. तो देखा जी आपको ये पूछना था. थैंक यू. मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ कि अहान से भी और निकिता से भी कि बहुत
क्या होता है कि कॉलेज लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है कि आप सोचते हैं कि वहाँ पर आपको एक वो एज में आपको सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, आपको अच्छा भी करना है, बुरा भी करना है, लेकिन वहीं से ही आपके आगे का जो एक होता है वो रास्ता एक अख्तियार होता है, वहीं से फॉर्मेटिंग ईयर्स वही होते हैं। सही बात है जी बिल्कुल सही बात है। आई थिंक एक चीज और होती है, जब आप कॉलेज में होते हैं आप समझते हैं कि आप सबसे ज्यादा समझदार इंसान हैं, जो आप कर रहे हैं वो एकदम सही है। वो आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा कि हर इंसान सोच रहा है मैं सही हूँ, मैं एकदम करेक्ट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो एक बहुत ही एक रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट का यही एटीट्यूड होता है। एंड मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ, जब कॉलेज में एवरीथिंग आई डू इज करेक्ट। तो उसके साथ ही लेकिन क्या होता है कि आपकी जो ज़िंदगी की पहली सीख होती है वो आपको इसी दौरान मिलती है, एंड दैट काइंड ऑफ डिसाइड्स योर फ्यूचर एज यू करेक्टली सेड। एंड अहाना, हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ इहान? कॉलेज लाइफ मतलब ऐसी थी या कुछ और थी? ऐसी है ऐसी नहीं लपड़े वाले नहीं थे। बिजनेस स्टूडेंट। एंड हर्ष आप इहान का काउंटर पार्ट है कालिदास। कालिदास ने तमिल में इहान का पार्ट किया है और संजना ने निकिता का पार्ट तमिल में किया है। तो आप ये सवाल इनके लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये कॉलेज में बहुत बड़े राउडी थे। राउडी दिखने में ऐसे बहुत स्वीट सिंपल लगते हैं, लेकिन ये कॉलेज में राउडी जयराम और संजना भी कुछ कम नहीं, संजना भी काफी Jairam is his father. But he's Kalidas Jairam. Sorry, Jairam. Your college life. I did my college in Loyola, Chennai, but I never went to class. I spent most of my time in theaters watching movies, but yeah, I actually got to play a student in the movie, so I just like to thank Vijay sir for that. And yeah, Actually, even in the film, you're bunking lectures. yeah, it's called method acting. So Kalidas, your name is Kalidas, or you really write also? No, just the name. It's just the name. Okay. Now, you're known for your music. So what kind of music can you expect? So this, it's always been part of my narrative. सर लुक जरा कैमरे के पास दीजिए ना, वहाँ पे Okay, sorry. So music has always been part of my story narrative, and this film is no different. This film actually, the album has about 4-5 songs, but the film has about 14 songs as part of the structure. So I've used a lot of music, and because the film is for the young adult audience, I tried to make it more accessible for them. So be it the way we have shot it, be it the way we have scored it, be it the way the kind of songs we have accumulated for the film, it is to try and connect to them the most. So I've tried. हर्ष से मेरा एक खास सवाल है। हर्ष, आपकी फिटनेस, आपका बंजारापन, आपका जो ये पूरा एटीट्यूड है, वो आपके इस रोल के लिए कितना काम आया? क्योंकि एक कॉलेज के लड़के का रोल है, तो वो जो आपकी जो पर्सनल लाइफ में जिस तरह से आप एक घुमक्कड़ी करते रहते हैं, जिस तरह से आप अपनी फिटनेस पर इतना ध्यान देते हैं, वो कितना काम आया, कितना वर्क किया इसमें? मुझे कई बार ये लगता है कि मैं जो से भागा था एक्टिंग करने के लिए, तो उसकी वजह से जो सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट से मुझे एक अलग तरह से जीने का मौका मिला। आई डोंट गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि ये मेरी क्वालिटीज़ हैं, बट जो भी घर से भागे हुए होते हैं वो थोड़े फ्री होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो आई डोंट टेक अ लॉट ऑफ क्रेडिट इन दैट। ये सब मक्कड़पन, थैंक यू, ये सब इसलिए है क्योंकि मुझे कोई प्रेशर ज़्यादा नहीं फील होता है, और आई होप विजय सर के काम आया हो इसमें कोई क्वालिटीज़। बट एक चीज़ जो मैंने लास्ट ईयर करी है, क्योंकि वो जो एम्बेरसमेंट है वो कॉलेज वाली, लास्ट ईयर मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स में बीए भरा है। माशाल्लाह, क्या बात है। After the film, he did that. Wow, great. लास्ट ईयर लाइक जून में मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम थे, मैं रोज 3.5-4 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये मेथड एकदम मेथड हो कोई नहीं, मैं भी एमए कर रही हूँ। आप ज़्यादातर उल्टा होता है, लोग पहले काम करते फिर फिल्म करते, मैं उल्टा हो गया मेरे साथ। मैंने पहले फिल्म करी और फिर मैं किया रिसर्च। So this is something I was very clear on right at the beginning, that I know it's very easy. Last couple of years we've seen that कि हम फिल्म को एक लैंग्वेज में बनाते हैं, we just dub it in all languages, and अभी आप कोई भी OTT में चले जाओ, आप फिल्म लोगे तो आप you can choose the language, you can watch it. So it's become very easy for audiences to choose, but I wanted to kind of try and
go back and try and be as pure as possible, as authentic as possible to the language that I am trying to tell the story in. So this story is set in a college which is very universal, very resonates with students from all over the country. So I saw an opportunity to try and do this film for the Hindi audience and for the Tamil audience. मैं चाहे तो इक्वल लैंग्वेज भी कर सकता था, बट मैंने सोचा चलो 2 ले लेता हूँ. Seriously. But वो 2 जो मैंने उठाया तो मैंने बोला कि let's try and be, I know vanity man let's try and be as authentic as possible to the segment that we are catering to. So which is why we cast people from the Tamil industry for the Tamil audience. We cast Harsh, Nikita, Ehaan for the Hindi audience to try and stay as authentic as possible, so the audiences get to experience it in the purest way that we were trying to tell the story. कालिदास आपसे थोड़ा मान आपसे ये जानना चाहूँगी, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि साउथ की बहुत सारी फिल्में बहुत वाइडली और ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट की जा रही है. अब जब आप यहाँ आते हैं, कितना अंतर पाते हैं? क्या आपने कोई अंतर महसूस किया कि आपने ज़्यादा लोग ओपन हार्टेडली आपको एक्सेप्ट करें, ये महसूस किया? No, so I've played the part in the Tamil version. Now you're here, so Yeah, I mean, see, it's always been a dream. Like I've seen like movies that DCs have made. And, like I've been a huge fan of Vijay sir. Like especially after David, like I've always wanted to work with him. And David was like one among the lot of movies that I bunked class. So it's a very surreal feeling to be part of this movie, playing the lead. And so Harsh's character in Tamil is played by Arjun Das, so he couldn't make it today. Yeah, like you said, I think audiences everywhere, they're like evolving, and I feel like the barrier is broken. Like this actor should do movies only in this language. I think that barrier is no longer there. Like people from South are doing movies in Hindi, like Hindi actors are doing movies in South. So I think that's not there. It's all about like choosing the right content, and I think as actors we also have a sense of social responsibility, and I make sure that like I'm whatever little bit political correctness that I have, that I think I have, so that's how I choose my movies. So इन्होंने आपको बिल्कुल आपने कुछ रैगिंग किया या नहीं किया? ये उल्टा है. No, it was the other way around. It was the other way around. Always, he's the one he's actually the one who's ragged everybody the most. Yeah, सबसे ज़्यादा. Including सबसे ज़्यादा इन्होंने सबको रैग किया. This will be the headlines. Ehaan and Harsh, of course, आप लोग ने एक्शन के लिए कैसे प्रिपरेशन किया इस फिल्म में, और किस तरह का एक्शन हमें देखने का मौका मिलेगा? हर्ष बताएगा क्या क्या. हर्ष बार मुझे आके बोलता था, सर ईहान का जूता यहाँ छप गया मेरे. एक विजय सर की बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, म्यूजिक के सेंस तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है. एक्शन कई बार मैंने उनको पकड़ा है खुद कोरियोग्राफ करते हुए और खुद इन्वॉल्व रहते हुए, मतलब विद द एक्शन कोरियोग्राफर्स. और मुझे बहुत शक है कि वो कॉलेज में ऐसे ही थे, वो बताते नहीं. और मैंने सर के दोस्तों से भी इंक्वायर किया. एक दोस्त आए थे इनके US से, मैं उनको साइड में ले जाके पूछा था सर ऐसे ही थे क्या, क्योंकि डैश में भी जो रेंज उन्होंने पोर्ट्रे किया तो मेरे को अभी तक इन्फॉर्मेशन सही मिल नहीं पाई है, बट ऑल दैट कम्स फ्रॉम हिम और हमें फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज he designs it in a very he designs it with emotion. वो कभी भी विजुअल पे एक्शन नहीं करते कि ऐसा मारना वैसा, कि क्या फील कर रहे हो आप उससे वैसे मारते. एक्शन में हमेशा इट्स बैक्ड बाय. I can safely say all of them, Arjun, Kali, Ehaan, Harsh, even the women, TJ, Nikita so had a small accident also on set with the action. Arjun broke his teeth. I didn't break his teeth. So, but we had a lot of mishaps, and only because we were trying to make the action look as organic and raw and real, and also the action was just not, as you can see in the trailer also, it was just not about them in the action. You could see there were like almost 100-200 extras who were also part of the action. So दंगे थी, riot था, तो हमको वो we had to portray it as authentic as possible. तो इसमें कितना भी आप रिहर्स कर लो, कितना भी आप बैकग्राउंड एक्टर्स को बोलो कि ऐसा करना है, कोई ना कोई आके इनको टकराता था और they used to give it back to them also. So all that happened a lot, and luckily on the last day of shoot is when one of the out of some
a crowd of 700 people, the firework went and landed exactly on Right Nikita's. here, right here. I still have the mark. It was a proper burn that happened. Luckily, it was on like the second last day of shoot. Second last or last day? Second last, because I had to come the next day. Last also she was fully covered. Her Yeah. t-shirt had a collar. Still is kind Bandage and stuff like that. But I don't know. I feel like it was even though I mean burn हुआ था अच्छा खासा. It was a proper third degree burn. firework that I had. actually came and landed on her. And because we were taking a one shot, I still remember जब तक कैमरा मेरे ऊपर आया तब तक ऑलरेडी फायर क्रैकर लैंड हो चुका था. उसको 1 मिनट हो चुका था. I was yelling and crying and because there was so much crowd and noise, nobody knew about it. So by the time these guys actually came to me, they didn't understand, am I acting? Has something happened? Because I was just jumping with pain. So then मुझे लगा क्या बढ़िया है क्या. and finally I was rushed to the hospital and like it was fixed. But yeah. Actually, in the teaser and trailer also, there is a shot where you can see Ehaan grabbing Harsh and they getting separated. There's a shot. Next time when you're watching it, next time when you're watching it, you have to watch Nikita in the shot. Somebody's managed to pull Nikita's hair in the Somebody's shot. managed to pull my hair from there. So if you see, it's there in the trailer. So in But this I'm trailer hugging you see- Harshvardhan. Somebody's pulled and I'm struggling like this. Ki bhaiya chhod do. But the focus But is so much on there that you're not seeing Nikita, but you can see Nikita is getting harrowed because somebody's pulled her. But you know that used to be our situation because as he said, the film is full of a riot. तो हमने actually shoot करते time ये experience किया है. We used to feel like we are in the middle of a riot. When we used to be starting the shot, we didn't know what's going to happen. किसको क्या होने वाला है. We used to just enter it. Question is for you. In Tamil version we have seen desi touches there. जहाँ हिंदी की बात की जाए तो वहाँ पे full classy. Why so there is a difference? आपने सोचा है हिंदी में भी ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने टोन, टेक्सचर एंड फ्लेवर दोनों फिल्म में एग्जैक्टली सेम रखा है. इनफैक्ट इवन I would say almost 80% of the shots are 90% of the shots are exactly the same. तो मैंने कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं किया है. Dialogues of course फ्लो के हिसाब से तमिल में थोड़ा अलग है, हिंदी में थोड़ा अलग है. But otherwise the flavor and in terms of the context we have tried to keep it as similar as possible. You know, just to add on to this, one thing I really want to appreciate him for is that even though shots have been very similar, but not once he's asked us to replicate each other. Yeah. So even though हम लोग एक साथ shoot कर रहे होते थे, like the Tamil cast is doing one shot, then the Hindi cast comes. He used to never say, "Ki see, this is what you have to do, or this is exactly." Not once also I said. Not, but there are so many got the liberty to do whatever we felt like, whatever he was convinced with, we were convinced with. We literally got the liberty to do. तो अगर आप दोनों फिल्में उठा के देखेंगे, आपको शॉट टेकिंग सिमिलर दिखेगी, लेकिन he's given us that freedom कि हमने सबने अपने हिसाब से किया. But there are so many times as cast we'll go to him and be like, see, listen, this is what they've created. Shall we do the same thing? He'll just be like, do what you have to do. Don't see that and take reference from it. Like, okay, let's just do what we have done. So he was very clear as to what he wanted, which is two separate films, Dange and Bhatt. And I think he chose the cast works out perfectly for them. When you believe writers side now, so whose side will you take now? Dange or both? Take both side. This one, no, I'll take his side. I mean, why choose when you can have the best of both? You know, I love your performance in Sarpata. It was very nice. You're looking very beautiful in the teaser. Thank you, sir. Can you tell us a bit more about your role, your character? I don't think I can say anything right. But from whatever like throughout the process, the one thing that I really enjoyed was dressing up every day. Because in my previous works, I didn't really get to do that a lot. It was always very different, like compared to whatever you see here and before. I used to look very different. So many times people would tell me, oh, I watched this film and I don't remember which character did you play. I'd be like, oh, is that you? This is exactly what I've been getting so far. This is probably very close to my real life my character, physically and emotionally, maybe, I don't know. Yeah, I really enjoy it. It's 2 hour 30 minutes. 2 hour 25, 2 hour 27. Somewhere close to. Thank you. Ehaan, one last question. We'll take one question. Karan Arjun कब देखें? 92, right? तुमने कब देखी? तुमने कब देखी? I was 5 or 6 then. एक्शन ये अपनी इंडस्ट्री में एक बहुत सीनियर एक्टर है जो अपने एक्शन के लिए बहुत फेमस है. वो सच में मार देते हैं.
There's another one coming up. He'll be known for method acting, especially while acting. There's a saying, pain is temporary, film is forever. Stars and marks are also. जूते छप चुके हैं. Thank you. I wanted to say, आप लोग सब ने, you all came, thank you so much for coming. But मेरा ये बहुत, it was my wish to show you both the trailers. Unfortunately, मैं तमिल ट्रेलर आपके लिए नहीं रेडी कर पाया, but आपने एटलीस्ट हिंदी देख लिया. But I think by later tonight we'll put both the Tamil and the Hindi trailer. दोनों देखिएगा, आपको वो फ्लेवर की बात कंपेयर करके देख पाएंगे. Yes, definitely. Thank you. Picture? Yeah. Shares. Bye.